reconnect, then again have a class of so देखते हैं whether we have a break after 75 minutes or maybe every 35 minutes 5-minute break. ओके ठीक है um, सर 35 मिनट्स का रख लेते हैं 5 मिनट्स ठीक है, का 5-5 मिनट का रख लेंगे. That's all. हाँ That is more than enough break I need. बोलने में दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं. All right, नहीं सर तुम्हारी ब्रेक भी चाहिए वैसे fair enough. All right, so exo, सर अपनी स्क्रीन शेयर कर दो I am on the whiteboard here. व्हाइट बोर्ड पे अच्छा मुझे तो Zoom नहीं पे दिख रहे ये रहा. एक बार करना दोबारा से एक मिनट Exothermic. सर आप 2 मिनट रुकना मैंने से ना वेब ऐप से ज्वाइन करा तभी दिख नहीं रहा अच्छा ठीक है. Don't you have a laptop of मैं your जरा own? नो सर अच्छा, okay. Buy a Mac machine and finish it for next 10 years. लेना मैकबुक ही लूंगा मैं सर एक मिनट मैं दूसरी ऐप से ज्वाइन कर Okay, no worries. Take your time. रहा हूँ मैं एक मिनट सर हाँ हाँ, take your time. आराम से. सर हम्म. यस बिल्कुल शुरू तो नहीं करा ना No. ठीक है तो आईपैड आ गया मेरे Okay. पास So settle down easily. You can see the board now, right? यस 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 एक घंटी बज रही है फिर से. मंदिर All right, can we start now? या Okay. I think you already know this. What are हाँ जी exothermic reactions? Nothing, no brainer. exothermic reactions are those reactions in which heat is released Okay. So let's say we're talking about evolution of heat. Any examples? Combustion reactions? yes and क्या कहते हैं reaction of sodium with water ठीक है. and Endothermic? endothermic reactions are those reactions in which heat is used Okay. absorbed ठीक है. And now, so this is a basic definition. Now, how do we link an exothermic reaction and the
endothermic reaction to the concept of change in enthalpy. Okay, so delta H is the change in enthalpy. Okay, so what is the change in enthalpy in a reaction? In a reaction, which could be endothermic, it could be. So delta H is equal to heat content of products minus heat content of reactants. That is heat product minus HR is the enthalpy of a reaction, the enthalpy change that happens in a reaction. In a reaction, or yeah, enthalpy change. So this is change in enthalpy in a reaction. So a reaction happens, you calculate the heat content of the product, subtract the heat content of the reactants to get the answer. Okay, exothermic में अब इसे लिंक करना है. Exothermic reaction. Okay, now let's link it. Heat is given out in the reaction. ठीक है, तो heat should be released. इसका मतलब जो heat of reactant है, वही it नेगेटिव is होना greater चाहिए. than the heat of product. ये तो फिर नेगेटिव होना चाहिए. This is heat lost. Delta H is negative. Yeah, that is correct. Automatically, HR is greater than HP. If you put it negative, so HR is greater than, and if you say, so this is yes, negative enthalpy change. And endothermic is vice versa. That is correct. Endothermic Would be positive. reaction, the enthalpy change is positive and HP is greater than 0. So HP minus HR. इनकी थोड़ी मोटी कर लो. Okay. Is it fine now? Yes. Okay. So it is positive. So the enthalpy change is positive enthalpy change. Okay. So this is actual thermochemistry start. When reactions are happening and we are calculating the... वो जो कैलोरीमीटर था वो भी थर्मोकेमिस्ट्री थी. I think this should, but calorimetry एक अलग ब्रांच है. उसमें रिएक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता. कोई भी चीज उठा के जला दी तो बस कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है. बट आई कैन से दैट कि इस रिएक्शन में मैंने ओलिव ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू निकाली थी 1 ग्राम की, राइट? बिकॉज वो भी तो वही है, थर्मल रिएक्शन. Okay, so let's talk about now thermochemical reactions. Okay, so the concept of a thermochemical reaction. Okay, so one is you write the chemical equations, reactions happening, and just focus on moles. But when we talk about thermochemical reactions, our focus is not only balancing the moles, but also we're looking at the heat evolved and heat absorbed during the reaction. So these equations, sorry, it's not a thermochemical reaction, it's thermochemical equations being discussed. Okay, so the equations that deal with absorption and absorption of heat, evolution and absorption of heat are called as thermochemical reactions. Okay, so we will discuss now the such reactions which are chemically balanced, and then we are studying the heat evolved or absorbed. Okay. Is the key characteristic. Okay, now let's talk about first one. Okay, so let's say we are studying the heat of a reaction. Okay,
heat of reaction or enthalpy of reaction, जो हमने ऊपर डेल्टा एच रखा था, या उसका नाम होगा enthalpy of reaction. One and the same thing. The word heat of the reaction also means enthalpy change, enthalpy of the reaction. So it is no different than the heat of reaction or enthalpy of reaction, one and the same thing. This is okay. So what are the factors on which it depends? Obviously, how much quantity of reactants were involved, quantity of the reactant. And this is common sense. More is the quantity, more is the heat released, or okay. B. What is the other thing? It depends on second thing. It depends on the physical state of the reactants And also the and nature of the reactors and products. yeah. So when we say physical state, our focus is class 9th, latent heat of vaporization and latent heat of fusion. तो मतलब solid to sublimation, etc., जो भी पढ़ते हैं, all of that, right? So it is, so when we study, for example, water is getting converted into, okay, liquid on the other side. So this is liquid, remember, okay? So ठीक है. delta H for such a scenario is minus 285 point kilojoule per mole. Negative uh, enthalpy change. And in the same case, if you have a water getting created by the same reaction, कि सब gas ही हैं, but on the other side it becomes water gas. Okay, and delta H is equal to minus 241.8 kilojoule per mole. So you can see the difference. The state matters on the right hand side. If you create water liquid, this is your enthalpy change. But if you create vapors or of water, the enthalpy change is different. Okay, so physical state is also very important in deciding what will be the overall enthalpy of a reaction or in enthalpy change of the reaction. I think I'll just use the word enthalpy change. C, which is the allotropic modifications. Okay, so if you have carbon in the form of diamond, if it is made up of, it is behaving like a diamond, O2 gas, it will give you some enthalpy. It becomes carbon dioxide. The enthalpy तो of फिर the से reaction, गरम कर भी पाएंगे डायमंड, इतना हार्ड होता है. सब कुछ हो जाता है यार. उसका Combustion, you mean, हाईएस्ट वो right? होगा, क्या Combustion. कहते हैं, हाँ कंबशन. Create those conditions. Can. Now it is graphite. Carbon dioxide हो गया, ठीक है. So you can see almost same. थोड़ी सी एलोट्रॉप्स हैं दोनों. डायमंड और ग्रेफाइट में थोड़ा सा फर्क आया है, बहुत थोड़ा सा. इट्स वेरी माइनर एक्चुअली. एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन से किस चीज को आपने रिएक्शन को कार्बन के डायमंड से करा या कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट करा, उससे भी फर्क पड़ गया. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solution. So if you have a solute which is dissolved in solvent and you have created a solute, how much of solute you have dissolved to create molarity of the solution? Stronger the molarity, more quantity is there. So the solution which is involved in the reaction, the concentration will vary. ज़्यादा strong molarity की बनाई है, कम molarity की बनाई है. So it will affect the concentration of solution will also affect सर, the. हाँ जी. सर जैसे कि हम लाइक 500
500 मीटर क्यूब में हाँ, वी आर डिसॉल्विंग लाइक शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। यस यस। तो सर वो मिनिमम मोलैरिटी कितनी होगी फॉर इट टू रीच अ सैचुरेशन पॉइंट? क्वेश्चन ही समझ में आया। सैचुरेशन का क्या मतलब है इससे? मतलब घुलेगी नहीं हो। नहीं, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू इंथैल्पी? अच्छा। What is your question is not clear to me. Your question is on solubility or your question is नहीं मतलब सॉरी, thermochemistry? मैं एक मिनट रुक जाओ। कि लाइक हीट उसमें कन्वे में मोलैरिटी कैसे चेंज होती है वैसे? भाई, if you have for example a very strong sulfuric acid, then the products you have which are going to react, sorry, the reactants you have more energy inside them. If you have a diluted sulfuric acid, you put it on a coin, धुआं निकलेगा मेटल के ऊपर. Now put the concentrated sulfuric acid on the same coin. See the amount of heat which gets generated. Because you have more sulfuric acid, right? The product which you are using is highly, it contains energy. The heat content in the bond, the nucleus, and all that is very high. So its heat content is very high. That gets released during the reaction. और तभी तो यूज करते हैं डेली लाइफ में. वी डोंट हैव concentrated acids being used. They are not available because the heat which is released is very high. What you use is diluted. जैसे घर में सफाई के लिए use diluted acid for cleaning wash basin and all that, toiletries and all that. समझ आ गया? So concentration is a very important. Okay, E, condition oriented, temperature. If you do the temperature, most of the time you might have seen the temperatures are done at STP, हाँ जी, 298 Kelvin. But in thermochemistry, increase of temperature, decrease of temperature may have impact on the heat रिएक्टिविटी। heat content of the heat of the reaction. I'm sorry. Enthalpy of reaction बोलना है, enthalpy change बोलना है, या heat of reaction बोलना है, एक ही बात है. Okay. Then of course the conditions of constant pressure or constant volume, right? This also will impact the. Okay. Now ये हमने याद नहीं करा था, but we used it at one place. I remember. कौन सा Okay. वाला? I will show you now another definition oriented, very theoretical abhi, but all of this is important to do because otherwise you'll get stuck in terminology कि हमें terminology नहीं पता. So standard enthalpy of reaction. Neutralization में हमने देखी थी H आयन और OH आयन की हमें 57 पॉइंट कुछ आ हाँ रही थी. जी। वो अगर पता नहीं होगी तो फिर आप निकाल नहीं सकते. So sometimes these standard enthalpies are not given in your question. You should know that what are the standard enthalpies of some reactions, which you will see as it progresses. So the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change of a reaction okay uh, when all the reactants and products are taken in standard states. मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है? द सब्सटेंस शुड बी इन इट्स प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म at STP conditions. One standard temperature of 298 Kelvin, pressure of 1 bar or 1 atmosphere. This 98 is सेकेंड।
तो सब्सटेंस इज वेरी स्टेबल नॉर्मल सिचुएशन में भी तो 25 रूम डिग्री पे। टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। हाँ जी, रूम टेम्परेचर होता है 298 हाँ केल्विन। एग्जैक्टली। कैन से 25 डिग्री को मान लो, जैसे कि आपके पास कोई केमिकल है इथेनॉल, ओके, सो यू हैव इथेनॉल। इथेनॉल एट 298 Kelvin is very stable and pure. ठीक। The pressure at the pressure conditions, but if you compare it with the ethanol, which is at a different temperature, it will not be stable. So ethanol स्टेबिलिटी पे 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सबसे ज्यादा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। एनी अदर फॉर्म यू ट्राई टू क्रिएट आर्टिफिशियली will result in ethanol becoming unstable and started to react with atmosphere, for example, कर सकता है। ओके, आयरन, व्हाट डू यू थिंक आयरन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कहाँ होती है? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयरन जो है, वेरी वेरी आयरन इज 500 Kelvin. It is the अरे most purest and one atmosphere. अच्छा, So he इतना is ज्यादा। referring to इसमें से if I subtract 273, I'm talking about 227 degree. 227 degree पर iron is the most stable. ओके। रूम रस्ट हो टेम्परेचर पे जाता है ना, रख ही नहीं नहीं तो सकते इसको स्टेबल। स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है। If you हाँ, keep your iron very at 227, probably rust formation will not happen because it will not react. It is very stable. तो इसको रूम गर्म करके टेम्परेचर पे रखना तो, पड़ेगा ना। हाँ या, रूम टेम्परेचर में तो यू आर गोइंग टू लूज। ओके, काफी ज्यादा है ये तो। यस। हर एक मेटल का और एक एलिमेंट का अलग होता होगा, कंपाउंड का हाँ अलग। यस यस, इंडिविजुअल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द important topic. So now that तो we know स्टेबल what स्टेट is, में ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। huh? हाँ, ये किसी और yes, it is stable. It's a stable state. ठीक। Okay, let me go to the next page because I think so I'm going to, तो ऐसे इंक तो बढ़ती नहीं, तो पेज अनलिमिटेड है। यार इन्होंने पेज के ऊपर लिमिटेशन लगा रखी है डेटा की। द मोमेंट यू राइट, द पेज गेट्स टू नो दैट इतना डेटा आ चुका है। Even if you rub it, there is a tick mark and the page stops working. Ink will not, no further data can go inside it. ऐसे मैं सारा रब कर देता हूँ तो भी इंक सीख नहीं होती। सैचुरेशन बॉन्ड आ जाता है पेज का। Something like that. वो मतलब irreversible है। More importantly, different types of heats and enthalpies of reaction. Okay. Now, there are many different types of enthalpies of a reaction or heats which we need to study. First one is the enthalpy of combustion. हमने बहुत सारा कर लिया है, but I think we did not give it any name. Enthalpy, okay, of, इसका कंट्रास्ट बेटर है, ब्लू का ही सही था। ब्लू, दो सारे बेटर ही। अब ब्लैक यूज कर लो, ज्यादा बेटर है मतलब। Okay, ब्लैक इज so मच बेटर। enthalpy of combustion. What do you think it is? When 1 mole of a substance is पॉइंट इन 1 मोल ऑफ combusted ऑक्सीजन। or oxidized in oxygen. When 1 mole of a सब्सटेंस substance, इज पॉइंट इन 1 मोल, और is, फिर कुछ भी हो सकता है। मोल ऑफ huh? ऑक्सीजन, जो मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो 1 मोल ही होनी चाहिए, या फिर कुछ और भी होते हैं? वो तो बैलेंसिंग से ठीक होगा ना यार। अच्छा अच्छा। यू ओके। विल बैलेंस द इक्वेशन ना। जब वी डिड ओलिव ऑयल तो उसमें C57 था, हाँ। कितनी, क्या रिएक्शन था। When 1 mole of the substance is oxidized or combusted, one is completely, I think a layman will use the word burnt. I will not use, completely combusted is a better word. Oxidized कह लो, इन ऑक्सीजन बोलने की क्या जरूरत है, completely oxidized, that's all. Methane plus 2O2 gives you CO2 gas.
plus 2H. During this reaction, the combustion, the heat which is released is lost by the system is minus 890. This is a very famous reaction. A lot of people know the standard enthalpy of uh, methane. पता होती है लोगों को 890.4. For every mole of methane which is combusted, and methane by the way is used as a fuel also, therefore it's used as a fuel. जितने में हाइड्रोकार्बन उनकी सेम इक्वेशन होती है ना, Yeah, प्रोडक्ट्स almost रिएक्टेंट्स balancing. जो Yeah, निकलते हैं agreed. सेम ही रहते हैं. Okay, now standard enthalpy of और वो भी अलग होगी ना, क्या कहते हैं, अगर मैं इथेन का निकालूंगा तो standard enthalpy of combustion sounds. So when 1 mole of the same substance, अच्छा स्टैंडर्ड लगा दिया हाँ, standard में the conditions have to be standard, which means 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure की conditions है. ऊपर भी वही थी जो ये reaction है, but बताया नहीं था. But if it is pure enthalpy of combustion, any condition was allowed. But if it is standard enthalpy of combustion, then any and every condition is not allowed. वो तो coincidence है कि ये भी STP पे है. नहीं होता तो भी बताना चाहिए था उनको कि STP है. बट STP पे अगर कुछ होता तो उसके आगे वर्ड लिखते हैं the standard enthalpy of combustion. 1 bar or 1 atmospheric pressure, 298 Kelvin पे 1 mole of substance. But the conditions are 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. You will call it the standard enthalpy. Okay. And the way to represent standard enthalpy of combustion is delta CH. But there is a catch in this, which is very subtle. That catch needs to be very well understood. When the reaction is happening and heat is getting generated, the temperature cannot remain 298 Kelvin. The temperature has to go up. Agreed? If you are having a burning of something and you're saying the temperature is remaining 298 Kelvin, how is that possible here? You're burning something and you're saying temperature will remain 298 Kelvin because I'm calculating standard enthalpy of combustion. So you should be very clear that 298 Kelvin का जो significance है, that the product start burning at 298 Kelvin, which is the condition. When the reactants burn, the temperature is going up, but you were saying, so what you do is you allow the temperature of the reaction to come down to 298 Kelvin. Okay. Now, whatever is the heat released is the heat of combustion. So heat of combustion is not that you will be able to maintain the temperature of 298 Kelvin. It is not possible. The 298 Kelvin is not going to be maintained throughout the reaction. Or the only way to do this is wait for the reactants to cool down and come at 298 Kelvin. Now, whatever is the heat change that is taking place is the one where you need to calculate. At 298 Kelvin, the product environment also needs to be at 298, which means anything which is getting created on the right-hand side also needs to be at 298 Kelvin. So when I say the condition is 298 Kelvin, I don't mean that throughout the reaction, the condition remain 298. That is not practically possible.
All right. So one thing we have studied already in bomb calorimetry or coffee cup was the concept of combustion of food, okay, which tells you about the calorific value per gram of. So if you burn, for example, carbohydrate, which is essentially glucose, if you have glucose with you, okay, solid glucose you eat, it gets eaten by us or whosoever. This is the reaction which is happening. And 6H2O, uh, okay, gaseous delta H, and this is equal to minus. So when I write this, if I write H of this, sorry, let me draw the figure. H of this, or I write H of 0. These two. These are one and the same thing. They only mean the enthalpy change. If you see this word somewhere, they're trying to tell you the enthalpy change that happened during the reaction. So in this reaction, when the combustion of a carbohydrate or a glucose molecule happens, the delta H naught, which is written on the right hand side, is minus 2840.0 kilojoule 1 mole. So if you have 1 mole of glucose molecule being burnt by enzymes, obviously, in your stomach, so that burning is a different type of burning, but oxygen presence is required. There's no fire as in fire. The amount of heat which is released is this much. If you're eating too much carb, I don't know you've felt it or not, your stomach can feel hot. हैं? गर्मी लगती है पेट में. नहीं As you age, you will realize it. Not now. अभी नहीं पता चलेगा. अभी तो you can digest, you can combust stone also. मेरे ख्याल से फैट से ज्यादा पड़नी चाहिए गर्मी. हाँ, वो तो खैर उसकी क्योंकि कैलोरिफिक कंटेंट ज्यादा है, राइट, पर ग्राम. उससे तो फील होता ही होता है. यस, होगा. But sometimes if you overload your stomach and combustion happens, you can, especially if you have very good metabolism, the combustion is very fast. Somebody like me who has a very strong metabolism, I feel that heat getting produced when I eat, and it comes right at the stomach. So what मेरे is को a चेक करके calorific देखूंगा. value? Huh? चेक करके देखूंगा. Okay. Observe it. You have to be like connected very consciously to when you eat, and then note what's happening in the stomach. Otherwise, तो बातें करते रहोगे पता नहीं चलेगा. To wait. Do you feel the heat or not? Burning. Okay, what's a calorific As a value? fire in the belly. Fire in the belly. Yes, कह सकते हैं. Combustion in the belly हो गया भाई. The most Calorific famous line. value. Calorific value of food. ये आजकल बहुत फैशन में है. So everybody wants to be slim and trim. So if you have 180 grams of glucose, 200 ग्राम ग्लूकोज खाने में आपको 2 दिन की कैलोरीज मिल जाती हैं. हैं? हाँ, if you eat 180 grams of glucose, because I think an adult Biologically हो गया requires related. 1500 kilojoules per day. People of my age need around 1200 to 1500. Okay. Sportsman, I think, needs 3000. So not. तो अगर आपने 90 ग्राम ये मतलब कितनी आज कितनी कैलोरी चाहिए था आपने कितना बोला था एडल्ट्स आप आपकी एज के लिए? 1200 to 1500. अच्छा. ये Maximum नॉर्मल है. 1800 if you दिस are इज doing 2840 a lot इज of नॉर्मल. weights. Huh? ये नॉर्मल वैल्यू है 2840. These are what? नो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना 2840. Calorie consumption by an adult. I think people tend to eat much more than this, but uh, sorry, this is not calorie, this is kilojoules. I'm sorry. I was referring to calories. So when we talk about calories of 1200 to 1500 calories, तो ये तो अभी डिवाइड होगा ना 4.18 से. किलोजूल 180 ग्राम ऑफ कितना 4.18 होता से है डिवाइड वैसे? होगा. 1 किलो में कितने 700 है. कैलोरी? 700 कैलोरीज हैं ये.
सो प्रोबेबली 360 ग्राम, मतलब 350 ग्राम खाना आपको खाना है एक दिन में। 350 ग्राम प्रोटीन वगैरह मिला के सब, ये तो ग्लूकोज है। तो आपका कैलोरी 350 ग्राम का मतलब है 150 ग्राम ब्रेकफास्ट, 150 ग्राम लंच, 150 ग्राम डिनर। And you can't eat it. I think I'm telling you on the higher side. 3,000 calorie है per adult, normal person. I disagree with them. It actually is not 3,000. My understanding it is not more than 1500. 1500 कैलोरी से ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। तो वो एक 18 ईयर्स वाले एडल्ट्स के लिए होते हैं, 18 साल के होते हैं। Maybe it's age dependent. It is. So आपकी next एज is में तो your, कम होता होगा कैलोरी रिक्वायरमेंट। हाँ, आउटपुट नहीं है ना भाई, you have to consume it. Enthalpy of formation. Okay. So obviously when 1 mole of the substance is formed from its element, when amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance is created or formed, whatever you want to call it, from its substance. Okay, and it is represented by delta H F. ये फॉर्मेशन है। अगर कंबस्शन होगी तो डेल्टा एच सी। फॉर्मेशन बोले तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट्स, एलिमेंट इकट्ठे होके जो बनाते हैं सब्सटेंस बन जाता है। पिकअप वाटर यार, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन हो गया, वो नहीं बन मतलब एक गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें दो एलिमेंट्स की कंपाउंड बनाते हैं हाँ, सॉर्ट ऑफ। यस, कैन से। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई। नो स्टैंड, द सेकंड विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेम वैसे ही होगा जैसे कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation. Now, standard of enthalpy of formation is when you have 1 mole 1 getting मोल ऑफ created, but now it is at 298 Kelvin and स्टैंडर्ड one, टेम्परेचर एंड प्रेशर। yes, 1 bar atmospheric pressure ऐसे बोल सकते हैं ना, लाइक व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज क्रिएटेड और फॉर्म created from its elements. फ्रॉम The इट्स एलिमेंट्स change, इन yeah, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। So if you create carbon dioxide, the 1 mole of CO2 gets created from 1 mole of carbon solid and 1 mole of oxygen gas. The heat change is when carbon dioxide gets created, the heat change is the tune of around 393 kilojoules per mole. Heat is produced when you have carbon burning in oxygen. कोयला, कोयला जलना बोलते हैं जिसको। Okay, so some important, हाँ यही है, CO2 393 kilojoules per mole will get released. ये तो उस चीज पे डिपेंड कर रहा है कितना Yes, क्वांटिटी ली है और right. क्या जला रहे हैं। Yeah. So let me show you one case. Okay, so recognize. So if you have 2H2 हाँ जी। plus O2 giving you 2H2O, ठीक है? And this is liquid. This is your gas. This is, of course, gas. And it is given to you that during this time, the heat of formation, which is a heat released during the reaction. Okay, I'm using del F for formation, and this is my nomenclature for heat change. Okay, इट इज and रिलीज थ्रू दिस एक्सोथर्मिक। huh? You have to speak louder here. Not able to hear you. इसमें हीट रिलीज हुई है। Huh? अच्छा ठीक Yes. है, एक्सोथर्मिक है ना। Yes. Question is, what is the standard? And this reaction happened at standard condition. So, what is the enthalpy of formation of water? ठीक है। 571 है।
-571 किलो जूल पर मोल। जूल है यार, सॉरी। केल्विन लिखते हैं। Remember, in this, 2 moles have got created. 2 moles, when they got created, you had -571. When 1 mole gets created, you will have 571 डिवाइडेड बाय 2। yes. This is your answer then. Because enthalpy is related to 1 mole of the substance getting created. If 2 moles are getting created, please ensure that you adjust the value accordingly. सर अगर हमने ये सब You have to be a bit louder or come close to your mic. Unless you're sitting like this, resting. नहीं 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 Please don't. ठीक। तभी तो मैंने लगाया. Even if I'm resting, my sound goes. मेरे पास अभी माइक नहीं लगाया ना, क्योंकि मैं आईपैड में Okay. कोई वो है नहीं पोर्ट। All right. And now the significance of standard enthalpies of formation. Okay, if you, for example, there's a reaction that happens, A plus B results in creation of C plus D. And now you know the individual enthalpy of formation. कि भैया ये A था सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी इंडिविजुअल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है. ये NaOH है, इसकी भी ये इंडिविजुअल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है. और रिएक्टेंट साइड पे भी मालूम है, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे भी मालूम है व्हाट इज द इंडिविजुअल हीट ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल कि वो खुद जब बने थे. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जब खुद बना था अपने एलिमेंट से, तो क्या हुआ था वो मालूम है. फिर हमें ये भी मालूम है कि NaOH जब बना था तो क्या हुआ था. तो जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका भी मालूम है कि वो इंडिविजुअल एलिमेंट से जब बनते हैं. सो इफ देर आर A plus B gives you C plus D, you know heat of formation of A, you know heat of formation of B. So they are molecules A and B, compounds, resulting in creation of two compounds or howsoever many. Do you know the heat of formation of them also, right? So heat of formation, if you know that also, then you can use this knowledge of heat of formation of individual compound in a product side and a reactant side to calculate the overall heat of reaction of that equation involving those compounds. तो आपको मालूम है A की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, क्योंकि आपने A को जब बना के देखा था 1 मोल, तो आपने ही नोट कर लिया X. फिर आपने B Y के साथ रिएक्शन करा, Y की भी आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन नोट कर ली कि Y जब खुद बनता है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, वो आपने नोट कर ली. फिर आपने प्रोडक्ट देखे राइट हैंड साइड पे, उनकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी किसी एलिमेंट से बने होंगे, बने तो इस रिएक्शन से हैं, लेकिन जब फॉर्मेशन की बात होती है तो अपने एलिमेंट से बनाना होता है. तो आपने देखा कि Z जो है एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट, वो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी लिखी हुई है चार्ट में, और एक और भी बना मान लो W. तो आपने सबकी अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअली पता लगा ली, तो ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन will be given by the heat of heat of formation of product minus heat of formation of reactants will give you the overall heat. So this is the significance of knowing them. It's very, very, very useful to calculate with the help of heat of formation of every molecule. So for example, if you are given you're given A plus B gives you CC plus DD. Okay, these are the number of molecules which are getting created. If you know the standard heat of enthalpy for this particular side, you can calculate it and say, okay, that is for 1 mole. So I will multiply A into delta H formation of A, obviously. Okay, because this is सबका per अलग mole अलग होगा ना, basis. जो उस पे पार्टिसिपेट करे इस रिएक्शन में। हाँ, हम फिर सबका B की भी कैलकुलेट कर निकाल लो. सकते हैं ना। B के भी निकाल लो, फिर C की भी निकाल लो,
क्योंकि पर मोल बेसिस पे है तो इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, इनटू डेल्टा एच अपॉन, सॉरी डेल्टा अपॉन तो नहीं है, इट इज सबस्क्रिप्ट है। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट द सी की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और सॉरी ये तो नॉट लगेगा ऊपर, नीचे लगाना पड़ेगा सी। और डी भी जब बना तो डी मोल्स थे, क्योंकि यहाँ पे तो एक मोल का हमें मालूम है उसकी फॉर्मेशन में क्या लगता है। सो यूज व्हाट यू डू इज यू ऐड दीज टू, then subtract this. So it is basically delta H formation on the reactant side, sigma. Okay, sorry, yeah, on the product side, sorry. So it is product minus sigma heat of formation of all the products will give you the standard enthalpy of the reaction. ठीक है। Any doubts in your mind pertaining to this? Pure नो, maths oriented है बड़ा, मतलब stand sum of समझ आ रहा है। enthalpies of formation of product minus sum of enthalpy of formation of reactants tells you the uh, enthalpy तो change in that reaction involving those molecules. ठीक है, ये एंथैल्पी चेंज की है सिग्मा वाला। सिग्निफिकेंस है, आपको फायदा क्या हुआ है enthalpy of formation पता लगाने का? Because it gets utilized in the calculation of standard enthalpy of some reactions. क्योंकि आपको इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो मालूम है, आउटपुट, क्योंकि वो जब खुद बने थे तो फॉर्मेशन क्या थी। अगर वो मालूम चल जाए हर मॉलिक्यूल की जो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो उनकी डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। आई जस्ट चेंज दिस, दिस इज रिएक्टेंट। इंडिविजुअल का मालूम चल गया, तो ये ठीक। दिस इज अ यूटिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस कह लो, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। व्हाट इज अ यूज, क्यों पता लगाया आखिर, व्हाट इज अ यूज ऑफ यू नो फाइंडिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कंबस्शन इज वेरी क्लियर, कंबस्शन ऑफ फूड इज वेरी यूजफुल, वी हैव टू नो। इसी तरह पेट्रोल, वी हैव टू नो 1 ग्राम पेट्रोल जलता है तो कितनी कैलोरीज इशू करेगा, नहीं तो फिर तो ऐसे दैट्स अ वे वी इवेल्युएट अ फ्यूल, द क्वालिटी एंड ऑल दैट, so that we anyway have to know, but enthalpy of formation का यूज बड़ा तगड़ा है, रिएक्शंस की, पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी पता चल जाती है, हीट चेंज। ठीक है, ठीक। लेट्स टेक अ 5 10 मिनट ब्रेक ले लें।
हाँ, हाँ जी। होप यू हैड अ गुड रेस्ट। मैं कुछ खा लिया था। मैंने अपनी फटाफट थर्मोडायनेमिक्स लगा दी अपनी आंखों के ऊपर। अच्छा, आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स, हीट मास्क। ओके, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। एक रूल हमने देख लिया है, जो 2 मोल्स के लिए हमने डिवाइडेड बाय 2 करा। ओके, सो इफ यू आर गिवन अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ओके, सो उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपको कुछ करना पड़ता है, व्हेन यू विल डू द न्यूमेरिकल्स यू विल सी कि एक अगर कई मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं और कुछ कंपाउंड बन रहा है उनको ऐड करने से, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको ऐड करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो वैसे ही अलजेब्रा जब हो रहा है, तो अगर आप कभी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपकी इक्वेशन है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, ये तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और उसके ये मान लो, बट इफ यू डू मल्टीप्लाई बाय 3, okay, so this will become 3a plus 3bb gives you 3c plus 3dd. You had to do it because you were trying to reach some place elimination के process से, और इसको ये करने से आपको फायदा होता है। रिमेंबर, अगर इस रिएक्शन की आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दी हुई है, या कोई भी डेल्टा एच दे रखी है कंबस्शन की भी, फॉर्मेशन की भी, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक। अगर ये 1 मोल की थी हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर समथिंग, जैसे कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए दे रखी थी, पहले ही ए मोल्स हैं, तो पहले तो ए से भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन बाद में आपने अलजेब्रा करते हुए 3 से भी मल्टीप्लाई करा एक्स्ट्रा। तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं बोलता हूँ ये सिर्फ ए प्लस बी वॉज गेटिंग रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ सी प्लस डी। ओके, सो इफ दिस इज द केस, देन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको बीच में, तो आप अपनी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, जो ये पूरे रिएक्शन की डेल्टा एच थी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस molecularly balanced, also thermochemically, thermal point of view also, please make the uh, correct adjustment. Second, if you write the equation, if you write an equation and you know the heat of enthalpy during that reaction, but now what you do is you reverse it. You reverse the equation, you rewrite it, then what will happen? उसकी जो heat of reaction है या enthalpy change है, that will become minus delta H. Please inverse the sign. अगर ये C plus D था ऊपर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ C plus D results in creation of A plus B. Somebody said, okay, forward reaction के जो heat of formation है या heat of reaction है, वो ये है। तो बताओ जी, इसकी heat of reaction क्या होगी? Minus delta H, because you reverse the equation. Third, very important, the enthalpy change depends only on the initial and final state. It is not dependent on the path you have taken. It's a state function. So if you know that there is a many reactions are happening before the formation of A plus B, पहला एक रिएक्शन होता है, कुछ बनता है, फिर दूसरा रिएक्शन होता है उसका किसी के साथ बनता है, फिर तीसरा रिएक्शन होता है, और फाइनली ए प्लस बी जो है दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी।
बीच के जितने भी इंटरमीडिएट क्रिएशंस थे या ये थे, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप बोलोगे मुझे बताओ इधर कितनी हीट है और इधर कितनी हीट कंटेंट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे, आई विल सब्ट्रैक्ट। आपने ये रिएक्शन A+B पहले ये बनाया फिर ये बनाया, या आपने ऐसे करा स्टेप नंबर कुछ बनाया फिर स्टेप नंबर 2 कोई और केमिकल बनाया फिर बनाया फिर आप ऐसे गए, it doesn't matter to me. I just want to know what is my initial heat content and my final heat content, irrespective of what route you took for creation of the products. Doesn't matter to me. So I only depend on the initial and final state. So which means I am a state function, which means I am enthalpy is a state function. Fourth, when you do algebra of these equations, which you will have to do because of a process of elimination and to show that enthalpy is a state function. So when you will do manipulations, reverse the reaction and reverse the sign of the enthalpy of the reaction in the interim state or final state, whatever, जो भी जिस तरह का न्यूमेरिकल है, एक बात का ध्यान रखना है कि when you do the cancellation on both the sides, कि अब ये दोनों साइड में से ये कट गया क्योंकि इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उस साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये कट गए तो नेट रिजल्टेंट जो हमें चाहिए था वो आ रहा है। रिमेंबर व्हेन यू कट द enthalpies on both the sides, the physical state also must match. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई दो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड काट रहे हो, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था और उस साइड भी आ रहा था, लेकिन आप ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड काट रहे हो जो बेसिकली इज नॉट अ गैस बट इन अकरिंग इन सम other form. So please, you are not allowed to do unless you have, they are appearing all on the opposite side. So this is your product side, carbon dioxide, and this is your reactant side, carbon dioxide. In some interim reaction, एक रिएक्शन दो रिएक्शन ये तीसरा चौथा, इसमें एक जगह पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करना था तो आपने उसको करने के लिए उसको कुछ रिवर्स कर दिया, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेफ्ट और राइट से काट दिया। But be very careful that their एक बार मैं थोड़ा states. ये दोबारा समझा। Okay, so for example, there is a reaction which is happening, burning of coal. ठीक है। So you have carbon solid and you have half oxygen gas. This results in formation of carbon monoxide. The heat of reaction for this is -110.5 kilojoules. ठीक है? Carbon monoxide then reacts with O2 again, and what will it give you? Carbon dioxide. The heat of reaction is 283 ठीक है। point whatever kilojoule per mole होना चाहिए, sorry, per mole enthalpy है for 1 mole. Now let's calculate the overall reaction, ठीक है? So carbon solid plus half O2 gas plus CO plus half O2 result gives what? Carbon monoxide plus CO2. Tell me if you're not able to understand मैंने क्या करा। I have just added, I have done nothing. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, देख लो। सीओ कट रहा है, मैथ जैसा ही हो रहा है थोड़ा। बट ये कई जगह पे क्या होगा, बी वेरी केयरफुल, बोथ आर गैस, देयरफॉर यू कैन कट देम। अगर किसी रिएक्शन में सीओ की जगह यहाँ मैं लिख देता रिएक्टेंट्स और लिक्विड, प्रोडक्ट्स ही कटने चाहिए, है ना? कटने चाहिए बट दे शुड बी इन द सेम फिजिकल सेम स्टेट। स्टेट। कटने तो थे ये, वो कट तो गए, बट अगर सेम यहाँ कोई स्टेट और ऐसा सिचुएशन, सेम ही वो कहते हैं कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड नहीं, फिजिकल स्टेट भी सेम है, गैस है दोनों। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सेम ही कंपाउंड और सेम ही स्टेट। यस, कंपाउंड तो ठीक। सेम ही होगा, वो तो मतलब दैट्स नो ब्रेनर, राइट? द हाँ। पॉइंट ऑफ एम्फोसिस इज सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है। So some people don't know this. They will go and just, so what are you trying to say? You're saying chemically have to be same and thermodynamically also I need to be same. ठीक है। Then only I will get cancelled. Otherwise, please don't cancel me.
समझ में आ गया? यस। ठीक है। Okay. Okay. So let me go to the next page now so that, okay. So before I go back to the heat of formation and heat of combustion, दो heat हमने कर ली हैं और मैंने आपको कुछ rules उसके pertaining to manipulation of thermochemical equation पे बता दी. Let me tell you two laws which you have to know. It is better to introduce them right away instead of introducing and creating the suspense. I think the सस्पेंस। laws of सस्पेंस ही और क्या एंड में आगे पता चलेगा जब मतलब पूरी वो लंका जल जाएगी और वी विल कम टू नो द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, सो देयर आर टू लॉज. और क्या भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भरोसे चल रहे थे सारा. आपके सेकेंड थर्मोकेमिस्ट्री लॉ के भी आ पहले जाएगा। लॉ का नाम है लेवो लेवोजियर लावोजिए। लाप्लेस लाप्ला बड़ा लॉ LLL. इसको क्या बोलेंगे, लेवोइया क्या, नहीं, लेवोइया, लावोजिए। लावोजिए। लेवोजियर. और इसको इसको लाप्लेस। लाप्लेस। लाप्लेस. लाप्लेस। ओके, प्लेस. लाप्लेस। Okay. So what it लाप्लेस। states, it states that the enthalpy change accompanying a chemical process अच्छा, लॉ is ऑफ same. थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री अलग है। ठीक। First law of thermodynamics is very physics oriented law. मतलब अलग अलग है, बस ये समझ हाँ, रहा था। ठीक है। yes. But enthalpy accompanying is same in magnitude but opposite in sign to the enthalpy change accompanying the same process in the. अभी हमने पढ़ भी लिया था बाय द वे कि करना है, बट ये लॉ किसने बनाया था? रिवर्स लावोजिए। रिएक्शन में नेगेटिव साइन लगाना था यार. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ. सो इफ यू हैव वाटर plus half O2 gas giving you water as a liquid. And now reverse happens. You have to dissociate water. ठीक है। So you will get H2 gas plus half O2 gas. Delta H is equal to 286 kilojoule per mole. पर मोल. यही तो हमने पढ़ा था, नेगेटिव साइन लगाना है, दैट्स ऑल. लगा दिया नेगेटिव साइन रिवर्स रिएक्शन में. ठीक है। प्रोसेस अगर उल्टा हो जाएगा तो फिर नेगेटिव साइन लगा दो. रिवर्स प्रोसेस की इंथैल्पी भी पता लग जाती है. फर्स्ट लॉ. द सेकंड लॉ, which is what all those manipulation tactics will come into picture now, is the Hess's law. सी। एस लॉ। एस। Okay, so we know the tools now. क्या क्या हमें करना होता है. Equation is reversed opposite direction, basically Lavoisier-Laplace rule. कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो हीट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. और इस ट्रीटेड एज अ स्टेट फंक्शन, नॉट एज अ पाथ फंक्शन, सो दैट इंटरमीडिएट स्टेप्स की कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि एंड स्टेट और फाइनल स्टेट का हमें डिफरेंस मालूम है. बीच में से जो भी हो रहा है हम उसमें कुछ अननोन है तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसका फाइनल नतीजा दिस माइनस दिस ही आना है. तो नंबर अगर कोई मिसिंग भी है
तो सारे LHS ऐड कर दो, सारे RHS ऐड कर दो, कोई बीच में X है तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो इट्स अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन। सॉरी, इट्स अ स्टेट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन। ठीक। सो ये जो एल्जेब्राइकली हम कर रहे थे, ये सबसे हम्म, पहले हेसिस को ही मालूम चला था, एंड हम्म। दिस इज द लॉ कॉल्ड एज हेसिस लॉ। ओके, इट जर्मेन स्टेट्स, हेनरी हेस। हाँ, द हीट, ये जो एल्जेब्राइकली हम मैनिपुलेशंस करेंगे थर्मो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, द हीट, so you can bring about a change chemically in many ways, doesn't matter, because from thermodynamics point of view, these are only state functions. Whether you want to bring about the change in many steps or you want to bring about the change in one step, it's your choice. Both internal energy and enthalpy are the state functions. They don't depend on the way you're going to change the you know create the chemical reaction. तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, आप गैस किस रास्ते से जाते हो, इट इज रियली डजेंट मैटर। जैसे कि हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देख ही लिया था, ये वाले में जो हम कर रहे थे, वो वाला कोयले के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कट गई थी, पर 2 स्टेप में बनी थी। अगर वो एक स्टेप में भी बन जाती, तेरे थर्मोडायनेमिकली मेक्स नो डिफरेंस, थर्मो केमिस्ट्री के हिसाब से द हीट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, बिकॉज हीट ऑफ रिएक्शन विच इज सेम एज enthalpy of the reaction, which is same as enthalpy change of a reaction, is independent of the path you took. It only depends on initial and final state. Clear है? Two laws, Yes. Lavoisier-Laplace law and Hess's law of constant heat summation. Very importantly. Okay. Let's say you have a situation. Okay. So you have half N2 plus half O2 gives you NO. Okay. And NO gas plus half O2 gas gives you NO2 gas. So half N2 plus NO gas plus half O2. I'm adding A and B algebraically, plus half O2 gives you NO plus NO2. If you have to, since you combine them, now subtract NO gas with NO gas. So half N2 plus O2, half O2 plus half O2 is O2 gives you NO2. Okay. So which means if you just do delta, if you want to find delta H for this direct reaction, and you were given this, कि भैया ये 2 रिएक्शन है, इसके अंदर हीट ऑफ जो इंथैल्पी चेंज है इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, हमें तो बताओ जी, जब ये होगा सी तब क्या होगा। तो आपने कंपेयर करके देख लिया, बेसिकली ए प्लस बी है तो सी, बट 2 स्टेप्स में हो रहा है, 2 स्टेप्स में। तो आप बोलोगे आई कैन टेल यू फ्रॉम दीज 2 स्टेप्स, अगर ये स्टेप डायरेक्ट भी हो जाए सी की फॉर्म में, इन दोनों की हीट ऑफ रिएक्शन ऐड करो, आंसर लो, खत्म। दैट्स अ हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है।
All right. Okay, so let's draw an enthalpy diagram. केमिस्ट्री की असाइनमेंट मिली है ये वाली? नो नो, स्पीड इतनी बढ़ाने की, असाइनमेंट एंड में आता है। असाइनमेंट केमिस्ट्री की मिलती ही नहीं। मैम बोलती है सिर्फ एनसीईआरटी से करना। ओह, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार। वी शुड बी गुड एट टेलीपैथी। एन जी, वो टेलीपैथी, क्या होता है? ओके मतलब होता मैं है। मन में बोलता रहा हूँ तुम्हें सुनाई देता रहे। ओके, टेलेकिनेसिस सॉर्ट ऑफ। यो। होना चाहिए सर। सर आज ना साइंस की जगह मैजिक होता, कितना अच्छा होता, हैरी पॉटर की तरह। क्या? मैजिक हाँ। होता ना, साइंस की जगह कितना अच्छा होता। क्या? सर कोई मैचेस देखते हो आप ऐसे, क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? सुनता भी नहीं मैं, देखना तो दूर है। सर डोंट इवन। अभी पता है आपका क्या, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है अभी क्रिकेट का? ये पता है कुछ चल रहा है ये, इतना पता है इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। बस इतनी। वो ट्रेन में सुना था आज, मेट्रो में। अभी सर कल क्या कहते हैं, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का था। ओ। इंडिया जीती, अभी टॉप पोजीशन पे है इंडिया। Okay, before we jump into that, do one numerical. Let's discuss it. Let me see your algebra. If you do this, you have mastered Hess's law. I'll come to the enthalpy diagram in a while. ज्यादा टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करता। लेट मी सी इफ यू हैव सर अंडरस्टूड। आज इतना नहीं करते हैं वो फिर। क्या हो गया भाई? ओए हेलो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हेसलॉ तो करते हैं, उसको अच्छे से कर हाँ लेते चलो ठीक है, ये कर लो एक न्यूमेरिकल, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी मेहनत ना करो करो, मैं भी सोच रहा था कि घिस ना जाना। हैं। इस गया है। क्या पता यू में गेट थर्मोडायनेमिकली रिड्यूस्ड। सर वो नहीं, मैं घिस हो गया है, एंथैल्पी कम हो रही है। अच्छा बेटा। ओके। अरे यार, क्या है ये? फिर 4 स्टेप्स में हो रहा है, बहुत बढ़िया। सर 4 स्टेप्स में हो रहा है, मैं तो सिर्फ 2 स्टेप्स का कर रहा हम्म। था।
इसमें सर वैसे कर मतलब एक मिनट, इक्वेशंस का कौन कौन सी इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा सर? हाँ जी, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? ये मैं बता रहा था कि मैं पूछ रहा था कौन कौन सी इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा। यार, यू हैव टू स्पीक लाउडर, आई कांट हियर एनीथिंग। सर कौन सी इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा? कौन से? कौन सी इक्वेशंस को? यार, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? एलिमिनेशन करते जाना है आपको, और फाइनली तो यू नीड दिस, राइट? दिस एंड दिस, बीच में जितने भी इंटरमीडिएट है उन्हें बैलेंस करते जाओ, काटते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, तो ये दोनों कट जाएंगे, 3O2, और एन रिवर्स वन ऑफ देम, इसको रिवर्स कर लो। ये दोनों एक ही साइड पे है ना, कटेंगे नहीं ना। हाँ जी। इसको या तो इसको रिवर्स कर लो या इसको रिवर्स कर लो। ये 3O2 है, ये 3/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको 2 से डिवाइड कर दो और रिवर्स कर दो, क्योंकि हमें B2O3 तो चाहिए नहीं ना। B2O3 तो चाहिए नहीं, तो उल्टा लिख दो या तो। आई होप द सेंस इज कमिंग आउट। हाँ जी। 2 से डिवाइड कर जी। देते मैथ से, ठीक है। इसको मैं नीचे वाली इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर दूं ना, वो कर सकते या हैं ना? दिस इज प्योर अलजेब्रा, एलिमिनेशन का प्रोसेस। जब इन दोनों को कर दिया मतलब रिवर्स, दो दो केमिकल इक्वेशंस को करना है ना, दो दो उठा के? एलिमिनेट करते जाओ ना, फाइनली यू शुड गेट दिस। यू हैव टू रीच हियर यूजिंग ओके। द इंटरमीडिएट अच्छा टूल्स। अच्छा, ठीक है, समझ गए। रिवर्स कर दी है? हाँ, हाँ रिवर्स कर रिवर्स दी। कर। इसका साइन क्या है फिर रिवर्स करके? पर ये तो 3O2 है और ये 3O2 है, ये 3O2 कैसे बना लिया? हाफ से मल्टीप्लाई करके। नहीं, अच्छे सॉरी। 2 से नहीं, मैं डिवाइड करा, हाफ से आई डिवाइड थिंक यू कर हैव डिवाइडेड, या विच इज फाइन। सो मल्टीप्लाई बाय हाफ करा था, राइट? हाँ जी। हाँ ठीक राइट है ना? ठीक है। मल्टीप्लाइंग, सो यू हैव डन दिस मल्टीप्लाई बाय हाफ, बट ठीक फिर है, मैं इसको इतनी भी तो समझ हाफ गया से मैं। मल्टीप्लाई करो। नहीं नहीं, तो मैं वो डेल्टा लिख एच रहा, नहीं मैं लिखो ना फिर। एंथैल्पीज लिखा मैंने, अभी एंथैल्पीज नहीं भी लिख लिखनी रहा। चाहिए राइट साइड पे टेबल बना हाँ के, लिख रहा। यहाँ पे। ये रहा टेबल, जैसे इसने टेबल बनाया है मस्त, इक्वेशन और उसका, ये टेबल उसका हो गया, रिएक्शन -1273/2 डिवाइडेड बाय, एंड उसके सामने माइनस, नहीं आ रही, और ये नीचे वाले के सामने आ रही +2035। है। हाँ, बिल्कुल गलत तरीका लिखने का, चलो उसके मैं ऊपर ठीक ही से नहीं आ लिखता रही। हूँ, मैं ठीक से लिखता हूँ सर। कॉपी इट एंड पुश इट, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट इट एंड टेक इट अप। अब सही हो गई, ये लो।
तो मैं दोबारा से ठीक से लिख रहा हूँ सर। जी लिखो। अरे लाइनें बन गई। नो वरीज। कर पाए? ओके, डूइंग इट नीटली बेटर है।
सर जी। सम इसमें ना B2O3 मुझे कट नहीं रहा। क्यों कट तो गया? नहीं मतलब हाफ ही रह गया। हाफ ही हाफ रहेगा। हाफ रह गया B2O3। ये करा पहला स्टेप, हाफ बना दिया इसे, और ये B2O3 है 3O2। ये मेरे को ये डबल करा ना, मतलब सो ये गड़बड़ डबल लग करा रही है है। या हाफ करा है? ये सर हाफ करा है। तो ये तो 3/4 हो जाएगा फिर। 3/4। हाँ, 3/2 कोफिशिएंट्स को हाफ कर रहे हो, तो ये थ्री रुको, बाय फोर हो जाएगा। एक मिनट गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से तो डबल करना चाहिए इसे। हाँ जी। डबल इट। सर मुझे B2O3 हटाने, क्योंकि रिएक्शन में B2O3 है नहीं। समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं B2O3 को हटा रहा हूँ। मतलब इज इट एन आंसर और क्वेश्चन क्या है? डबल करना है, डबल। डबल। 4B। इसको 4B कर दो ना। सर बट फिर अगर मैं इसको डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 4B + 3O2 गिव्स 2B2O3, है ना? तो कुछ तो जाएगा। बस सर मुझे B2O3 अच्छा, को एलिमिनेट करना। यूर सेइंग कि ये B2O3 हमें मैं इस डिलीट रिएक्शन करना को है ही ना। रिवर्स कर रहा हूँ, हाँ, एक पहले रिवर्स वाले भी को। करना है। रिवर्स करने से भी तो कट रहे थे ये। नहीं, मैं तो पहले अप्लाई रिएक्शन द को। लेवुजियर लॉ ना। ठीक है, रिवर्स कर दिया, हो गया। अच्छा, मैं समझ गया। क्वेश्चन समझ आ गया सर अब। लुक एट दिस यार, B2H6 हैज टू स्टे इन द इक्वेशन। B2H6 तो एलिमिनेट ही नहीं करना। तो मैं तो B2O3 कर रहा हूँ। हाँ यस, मैंने पहला ही स्टेप था लेवुजियर लाप्लेस लॉ, और फिर बाकी वो एक जगह तो लगाना ही पड़ता है, लेवुजियर लॉ। सर ये 1273 और -2035 ऐड करके क्या आता है? हाँ जी। -2035 और +1273 को ऐड करके क्या आता है? इसका साइन तो उल्टा, किसका साइन उल्टा करा है? पहले वाली पहली इक्वेशन का। पहले वाले का करना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2B लेफ्ट पे ही है फाइनली। तो व्हाई हैव यू ब्रॉट 2B ऑन द अदर साइड? When you know the solution is this, 2B has to be on the left. You should have reversed this. और राइट साइड पे B2H6 है, मेक्स मोर सेंस। गलत करा है।
तो फिर B2O3 रिएक्शन में रह जाएगा। कट तो तब भी जाएगा जब इसको उल्टा कर दोगे तो। ठीक है। मैंने मैथ्स को क्या हो गया भाई, 10वीं क्लास की मैथ से भी लोअर लेवल है ये तो। हो गया भाई। इन प्रोग्रेस। रिवर्स कर दिया। अब हैव यू डबल्ड इट, इसको डबल नो, करा? नहीं नहीं। कोई स्टेप तो ठीक कर लो भाई, कटेगा कैसे? अच्छा, बिना बिना डबल करे हुए कट रहा है क्या? अब B2O3 कट रहा है। एलिमिनेट हो जाए। हाँ, काट दो, मत करो बस। डबल फिर। अच्छा, नाउ क्योंकि यू आर रिएक्शन एडिंग देम। ठीक है, कट गया। क्योंकि रिएक्शन में B2O3 है नहीं ना। ऐड देम। हाँ, वही कर कट रहा हूँ गया। मैं। ऑक्सीजन 3O2 रह जाएगी सिर्फ। तो केमिकली, और ये तो बस पॉजिटिव लाइन साइन कर छोड़ दिया। दो। ठीक है, ये स्टेप सही है, पॉजिटिव। 2 मिनट रुको सर, बस हाँ हो ही हाँ, आराम जाएगा। से, कोई मैंने अब देख रहा, आराम से कर दो। हाँ जी, अब कुछ मत बताओ, फिर मैं जल्दबाजी खुद में से हो ही जाएगा, करूंगा। फायदा नहीं है। ठीक है।
सर व्हाट इज 2035 -1273? क्या होता है ये? कर लो यार, ये मेरा काम नहीं है बताना। ऐसा कैलकुलेशन ही तो नहीं आती। नो क्लू। रिकॉर्ड बनने वाला आज कैलकुलेशन का। ये 3/2 ऑटो को भी उधर ले जाओ ना, रिएक्टेंट वाली साइड ले यस। जा सकते हैं ना? यस। वाटर वाटर तो उधर ही रहने दो। लास्ट इक्वेशन काम आ जाएगी अब। ठीक है, अपने को ये चाहिए। यस चाहिए। मेन रिएक्शन में। 1/2 gas which is 762 joules. Okay. अब सब होने वाला जी। है। और यार डैम इट, सर ये लिक्विड में है। हम्म। चलो ठीक है, लिक्विड में नहीं। यस। वो बेटा, उसमें एक स्टेप में वो है, लिक्विड है। हाँ जी, हो जाएगा वो भी। लास्ट रिएक्शन कोई काम तो नहीं आ जाएगा? लास्ट रिएक्शन ही काम आना है इवेंचुअली। ओके। वो एक लास्ट होप भी है। हम्म। तो सारी जितनी भी अलजेब्रा है इसकी, वो सारी यूज हो गई इसके अंदर। जितने भी रूल्स थे मैनिपुलेशन के, कोफिशिएंट, डबल, रिवर्स, स्टेट, फिजिकल स्टेट का ख्याल रखना, सब चेन मैनेज हुआ है। अब कटना शुरू।
यार बस कर दे, मैं थक गया हूँ बहुत यार। बस होने ही वाला है क्वेश्चन। टायरिंग मी आउट मैन, सच अ सिंपल थिंग। इसको इधर रख दो, इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऐड कर दो, आंसर। एक क्वेश्चन बस कर लेते दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन गॉड गिव्स यू ब्रेन एंड यू रिफ्यूज टू यूज इट। हो गया भाई। हाँ बस हो ही गया। लास्ट स्टेप है बस। गुड क्वेश्चन एंड वेरी यूजफुल टू नो। यू हैव डन द, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट का वो कर लिया। डन। आ गया सर, हो गया। ठीक है। 1488 किलो जूल। वेट। 1 4 8
सर I'm just comparing. Answer is 36 kilojule. एक मिनट, 36। Yes. ओके। ओह अच्छा, आई गेस यहाँ पे मुझे शायद वो लिखना था, माइनस लिखना था। अब सही है। यस यस, ठीक, समझ आ गया।